8 ही लोग हैं। आएंगे चलिए। स्लोली, वो आते हैं। हाँ। लेट अस स्टार्ट। मैं क्या अपन मैं इतना रुकेंगे मतलब नहीं, जो आदमी आता हाँ टाइम पे हाँ उसको पनिश नहीं करना चाहिए ना। हाँ हाँ, मैं डाल देती हूँ ग्रुप में दैट वी हैव स्टार्टेड। ज्वाइन इमीडिएटली, बस इतना लिख दो। हाँ। तो ये जो पिक्चर है ना, इमेजेस की, पूरा डार्कनेस है, थोड़ा सा दरवाजा खुला है और पूरी लाइट आ रही है। हमारे जीवन में भी नेगेटिविटी इज द डार्कनेस, एंड व्हेन वी ओपन आवर माइंड टू पॉजिटिविटी, ऐसे ही होता है। द लाइट कम्स इन एंड इट फिल द रूम टोटली। पॉजिटिविटी की हल्की किरण से भी इतना फर्क पड़ता है। एंड व्हाट इज डार्कनेस? डार्कनेस मतलब एक, लाइट को क्या होता है हिंदी में? लैक ऑफ लाइट। हाँ नहीं, लाइट को हिंदी में क्या होता है? लाइट को वर्ड क्या है हिंदी का? प्रकाश। प्रकाश। उजाला। प्रकाश का अभाव है। उजाला। हाँ, नेगेटिविटी क्या है? प्रकाश का अभाव, ये डार्कनेस। सो इट इज लैक ऑफ लाइट। सेम वे नेगेटिविटी क्या है? इट्स लैक ऑफ पॉजिटिविटी। आपको नेगेटिविटी लानी नहीं पड़ती। आपको बगीचे में वीड्स उगाने नहीं पड़ते, वीड्स अपना उग जाते हैं। अच्छा फल फ्रूट हमको उगाना पड़ता है, उनको कीड़े से बचाना पड़ता है। सो एनीथिंग गुड यू टू डू हैज टू बी डन डेलिबरेटली, नहीं तो वो उसी डार्कनेस में चला जाता है। वीड्स को हम निकाल के फेंकते हैं और हमको फ्रूट लगाने पड़ते हैं, हमको भाजी लगानी पड़ती है। इसी तरह आज हमारा जो है चैप्टर, इट इज अबाउट हाउ टू रिमूव नेगेटिविटी। तो रिमूव कुछ करना ही नहीं है, वी हैव टू जस्ट फील इन द पॉजिटिविटी, जस्ट फील इन पॉजिटिविटी। वो अपने आप निकल जाएगी। नेगेटिव है ही नहीं कुछ, इट इज लैक ऑफ पॉजिटिविटी। सो वंस यू फील विद द पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी will go away, it will vanish। अब कभी हल्का सा पॉजिटिव आता है, आप देखो कितना अच्छा लगता है, हल्का सा पॉजिटिव कुछ हो जाता है, फॉर दैट मोमेंट यू फील सो नाइस। आपका सर दुख रहा है और कोई एकदम आपके खास कोई आगे बंदे whom you love lot, whom you respect lot, या आप कोई अच्छा मूवी लगा दिया आपने जो आपको बहुत पसंद है, या ऐसा कोई काम जो बहुत जरूरी है, बहुत पसंद है, उसमें आप लगे, आपका सर का दुखना बंद हो जाता है। हम रोज बोलते हैं हमको भूख लगी है, भूख लगी है, 12 बज गए, सुबह 10 बजे नाश्ता बनता है, बट द डे यू डू उपवास, नथिंग कम्स इन द माइंड। जब आप पॉजिटिव हो जाओगे, नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। इट इज लाइक एक बड़ा सा कैन है, उसमें पूरा ब्लैक कलर भरा है, पूरा ब्लैक है, उसमें व्हाइट डालते रहो, वो कभी ब्लैक का व्हाइट नहीं होगा। मगर आप कंटिन्यूस डालते रहेंगे, धीरे धीरे पूरा ब्लैक अपना बाहर निकल जाएगा और खाली व्हाइट बचेगा। बट इट लॉन्ग टाइम, इट टेक लॉन्ग टाइम। ये बात हुई कलर की, मगर वो ड्रम खाली कर दिया और अपने व्हाइट कलर भरा इमीडिएट, तो आपको भी पॉजिटिव लेते रहोगे तो निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, मगर उसको टाइम लगेगा। बट इफ यू रिमूव द नेगेटिविटी, बिकॉज यू टू अंडरस्टैंड, आप इस जीवन में हो, आपको भगवान ने बनाया इसलिए कि आप खुश रहो।
यू आर सपोज टू बी हैप्पी इन लाइफ, मगर हम खामा खा एक छोटी छोटी बात लेके हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। ये कल ही हमारा शाम को हमारा एक सेशन था ना, उसमें वही बात हुई। किसी ने कहा मैजिक रॉक लेके यू नो थिंक अबाउट व्हाट गुड हैपेंड एंड देन थिंक ऑफ द बेस्ट दैट हैपेंड, और लेके सो जाना है। तो किसी ने बोला कि समझो कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं अच्छा, कोई खास अच्छा नहीं हुआ। मैंने ठीक है, कल मैं म्यूट पे था, कहीं बाहर था, आई जस्ट सेंड द मैसेज। मेरा एक बंदा, आप लोग सभी सोचिए, आपको कोई एक वर्ड गंदा बोल दे, कोई गाली दे दे, आई थिंक जतिन वाज देयर, राइट जतिन? आप थे? जी जी मेरा कोई आदमी आपको एक गाली बोल दे, एक छोटी सी कोई आपकी बुराई कर दे, आपको इतना बुरा लगता है, आपको गुस्सा आता है, आप लाल पीले हो जाते हो। मगर जब कोई आदमी थैंक यू बोलता है, कोई आपकी बड़ाई करता है, आपको कुछ नहीं होता है। किस प्रकार के इंसान है आप? तो उस थैंक यू, आज के दिन में, पूरे दिन में कोई आपसे कोई अच्छी बात नहीं की हुई, पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमको ये सीखना है कि हम अपने आप से कैसे अच्छे रहे। वाई टू डू, हम करते हैं मिरर एक्सरसाइज। व्हाट इज इंपोर्टेंस ऑफ मिरर एक्सरसाइज? टू बिल्डिंग अ सेल्फ लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपने तो कुछ अच्छा किया हुआ ना बात अपने आप से, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बी थैंकफुल फॉर दैट। और रात को रॉक हाथ में लेके ऐसी कोई छोटी सी बात जो अच्छी हुई हो, या आपने कुछ अच्छा किया किसी का, उसको ढूंढ सोचिए और सो जाइए। जरूरी नहीं कोई आपको बोले, आपने किसी का भला किया हो, आपने किसी का बारे में अच्छा सोचा हो, किसी याद आई हो। देयर कुड बी एनी रीजन टू बी हैप्पी, एंड टू बी हैप्पी डोंट नीड रीजन, यू जस्ट हैव टू बी हैप्पी। हैप्पी होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए। मगर हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है कि हम छोटी छोटी बात पे घृणा करेंगे, गुस्सा करेंगे, और बहुत कुछ होता है लाइफ में जिसके लिए हमको बहुत खुश होना चाहिए, बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, वो हम नहीं करते। तो हमें ये आदत डालनी है अभी कि वी शुड बी हैप्पी एट एनी इंस्टेंस। मैं तो बोलो, हमको हमेशा खुश ही रहना है, देयर इज नो रीजन टू बी अनहैप्पी। कोई भी तकलीफ आई हो, प्रॉब्लम हुआ हो, इश्यू हुआ हो, और आप नाराज रहते हो, उससे होता क्या है? कैन समबडी आंसर? इवन यू कैन राइट इन चैट। इफ देयर इशू प्रॉब्लम है और आप एकदम डिप्रेस, नाराज, गुस्से में, उससे क्या होता है? At least write in the chat. If you can't, if you want to speak, I will be happy. हाँ जतिन जी, लाइफ में ऐसा कोई इशू आया और आप नाराज होते हो, डिप्रेस होते हो, आप गुस्सा में होते हो, क्या होता है उससे? उससे बस सर हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं बस, हाँ, और उसी वक्त आप उसी चीज पे आप बल्कि रादर डबल नुकसान कर रहे हैं। एक तो जो तब चीज नुकसान आई, करें। चैलेंज आया, और फिर हमने अपने थॉट से भी नुकसान कर दिया। बस, और उस वक्त आपने गुस्सा नहीं किया और आपने उसको समझ लिया, इशू को, अपने प्रॉब्लम को समझ लिया, यू बिकम अवेयर ऑफ दैट एंड यू स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट कैन डू। ये भगवान ने मुझे प्रॉब्लम दिया है, यूनिवर्स ने मुझे प्रॉब्लम दिया है, बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ सॉल्विंग इट। आप ये सोच के आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, आपका दिमाग खुला है तो क्या होगा? यू विल फाइंड सम सॉल्यूशन, यू विल फाइंड सम वे आउट। जब आप नाराज और नेगेटिव हो, आपको कोई रास्ता ही नहीं दिखता है, आप और डार्कनेस में चले जाते हो, और एक हल्की सी एक लाइट आ जाए, आप थोड़ा आप सोचो, अरे बाप रे ऐसा हुआ है, कोई वांदा नहीं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा हल्का सा आप पॉजिटिवनेस लेके आओ। आप बोलो भगवान ने दिया है ना, कोई वांदा नहीं, वही मेरा भला करेगा। हल्की सी पॉजिटिवनेस लेके आओ एंड सी द प्रॉब्लम, हाउ द प्रॉब्लम वैनिश। और इसी तरह की जिंदगी मुझे नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द बुक। तो यही चलता रहेगा अपना।
यस, नितिन जी ऊपर जाइए. अपेक्षा इज रीडिंग. अपेक्षा दिख रहा है आपको? So I did it. अपेक्षा, कैन यू सी? Yes, sir, I can see. ओके ओके. A thankful person is thankful under all circumstances, whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in a job. अपेक्षा, वो जिन्होंने लिखा है उनका नाम भी पढ़ लेना. बहाउल्लाह, 1817 Baha'u'llah. to 1892, Persian founder Yeah. of the Baha'i faith. Baha'u'llah. यस. So whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of नहीं, एक health, मिनट or ना, एक मिनट. सॉरी, मैं वो बात पर. अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस. ये जो अभी बात कर रहे थे वही निकला ये, कि जो आदमी ग्रेटफुल होता है वो हमेशा ग्रेटफुल होता है. दे डोंट नीड रीजन. ओके, यस, लेट्स गो अहेड. बाउल्ला मतलब आपको मालूम ना, उन्होंने बाही फेथ बनाया है. उनका वो फेथ में देयर इज नो रिलीजन, उससे सब आ सकते हैं. यस, लेट्स गो अहेड. so whether it's a relationship in turmoil, financial pressure, a lack of health, or problems in job, negative situations arise because of a lack of gratitude over a long period of time. If you're not grateful for each thing in our lives, we are unintentionally taking those things for granted. Taking things for granted is a major cause of negativity because when we take things for granted, we're not giving thanks in return and we stop the magic happening in our life. Just as giving thanks to others will always lead to our life magically increasing, so must taking things for granted always lead to our life decreasing. Yes. When you take it for granted, मतलब एक छोटा आवाज आ रही है क्या हरीश जी की? मुझे आवाज नहीं आ रही है. So you're on mute. हाँ, नहीं म्यूट नहीं हुए हैं, ब्लूटूथ में कुछ हो गया है. म्यूट नहीं है, म्यूट नहीं है. हेलो, बोलिए अभी. हाँ, अब आ गई, अभी आ आ गई. रहे ना? आई डोंट नो क्या हुआ. अचानक से अच्छा, अब करने को. मैंने वो ब्लूटूथ चेंज किया, उसके लिए होगा. लेफ्ट से राइट ईयर का क्या ना, हम्म. उसमें कुछ होगा. सो व्हेन यू टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, मतलब छोटी छोटी बातों पे हमें खुश होना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए. हम वो करते नहीं है. वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. व्हाट डू यू मीन बाय टेकिंग फॉर ग्रांटेड? ठीक है ना, हो गया ना, ये तो होता ही रहता है, ये तो होने ही वाला है, हमेशा होता है. और छोटी सी दुख पे हम इतने उलझ जाते हैं, हम इसको इतनी तवज्जो देते, इतना उस पर फोकस डाल देते हैं कि वो नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है. फिर ये छोटे तो ग्रांटेड ले लिया हमने सब पॉजिटिविटी को, अच्छे काम को, और फिर नेगेटिविटी को इतना बढ़ा दिया, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यू विल बी फुल ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इश्यूज एंड प्रॉब्लम एंड ऑलवेज थिंकिंग बैड अबाउट योरसेल्फ. यू विल गो इन डिप्रेशन. उनको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखे, उसके लिए शुक्राना करना है, हमें कृतज्ञ होना है. इतना अच्छा जीवन दिया भगवान ने, उसके लिए कृतज्ञ होना है बस. सर We have एक got a एग्जाम्पल beautiful life. एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं आप, जैसे बोल रहे कि रोज के दिन में क्या अच्छा हुआ वो हम सोचते नहीं है, लेकिन कुछ निगेटिव हुआ तो उसको लेके पकड़ते हैं. सिंपल सी बात है, पकड़ के बैठते हैं. हमारे नल में पानी आता है या हमको लाइट हमेशा अवेलेबल है, तो हम उस वक्त उसका थैंकफुली ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं. लेकिन जब नल में पानी नहीं आता तो एकदम से आ जाता है कि अरे पानी गया, ऐसे कैसे पानी जा सकता है, मेरे घर में पानी ही नहीं है करके उसको बढ़ा देते हैं. लेकिन रोज जब आता है तब वी आर नॉट थैंकफुल टू दैट. तब हम लोग वी आर नॉट थैंकफुल टू द इलेक्ट्रिसिटी. सो सिंपल सी बात है कि हमारे ऐसी एग्जाम्पल के कई सारी चीजें हैं जिसको हम देखते नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड होता है. पानी है वो तो आएगा, नल है तो पानी आएगा, दैट इज टेकन फॉर ग्रांटेड. वैसा ही बहुत सा चीजें होता है. Yes. रोज होता है, हम सोचते हैं रोज होता ही रहेगा. Yes, let's go ahead. So are you grateful for your health when it's good? Or do you only notice your health when your body gets sick or hurts? Are you grateful for your job every day? Or do you only value your job when you hear there'll be cutbacks?
Are you grateful for your pay or salary every single time you receive it? Or do you take your pay or salary for granted? Are you grateful for your loved ones when everything is running smoothly? Or do you only talk to others about your loved ones when there are problems? Are you grateful when your car is working well? Or do you only think of your car when it breaks down? Are you grateful to be alive each day? Or do you take your life for granted? Taking things for granted results in complaining, negative thoughts, and words. Yes. So, मैं क्या बोलता हूँ अपेक्षा, you tell me, what do you do? Are you grateful for health when it is good, or you only realize when you are having a pain? Are you grateful for every money you receive? What do you do? no, I realized this while reading that everything has been taken for granted. So what if And- you start being grateful every moment? What will happen? कोई आदमी मिलने आया उसके लिए ग्रेटफुल, किसी से बात हुई तो ग्रेटफुल, सैलरी की नहीं, कोई पैसा या डिस्काउंट मिला तो भी ग्रेटफुल, बिकॉज गेटिंग डिस्काउंट इज लाइक गेटिंग मनी. किसी से प्रेजेंट आ गया तो ग्रेटफुल, हेल्थ आज अच्छी है तो ग्रेटफुल, मेरा सर दुख रहा है बस बाकी शरीर दुख नहीं रहा है, आई एम ग्रेटफुल, खाली शरीर दुख रहा है, मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है फिर भी मैं जिंदा हूं उसके लिए ग्रेटफुल. व्हाट विल हैपन? Deliberately, consciously being grateful, what will happen, Apeksha? you'll start attracting more blessings, the blessings that you think you don't See, have. I mean, when you're grateful for the things you have, you'll start attracting those things also that you don't have right now. yes. और मजे की बात करूं मैं अपेक्षा, व्हेन यू स्टार्ट बीइंग हैप्पी ना, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है. आपको अभी जो प्रॉब्लम है एकदम एक दिन में जाएगा नहीं, बिकॉज ये आपके दिमाग में बैठ गया कि आपका बॉडी पेन करता है. आपको मजाक लगेगा पर ये फैक्ट है. जैसे प्लेसेबो इफेक्ट है, ऐसे नोसिबो इफेक्ट है. आपके दिमाग में दुखता है, कभी अचानक दुखना है तो आपको पूरा शरीर दुखेगा. वंस यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल इन ग्रेटिट्यूड, आप धीरे धीरे देखोगे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा. इट विल बी अ मिरेकल फॉर यू. आई एम टेलिंग अपेक्षा, इट विल बी मिरेकल फॉर यू. द वे यू सेड टुडे कि आपका पूरा बॉडी पेन कर रहा था, और ऐसा बहुत बार होता है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगा. आपके जहन में से वो निकल जाएगा कि पेन भी कुछ है. जितना पेन पे ध्यान दोगे उतना और पेन बढ़ेगा, और उसी वक्त आप ग्रेटफुल होगा, भाई खाली पेन है ना, मैं जिंदा तो हूँ, मैं काम तो कर, मैं कम से कम उठ के बोले पेन में उठ के खाना तो बना पाई, खा तो पाई, खाना पच तो रहा है. इफ दिस इज द वे यू स्टार्ट थिंकिंग, आपके लिए अपेक्षा, मेनली फॉर यू आई एम टेलिंग राइट नाउ, यू विल हैव अ ग्रैंड हेल्थ. आप मेरे को याद करके बहुत मेरे को थैंक यू बोलोगे इसके लिए. इतना अच्छा हो जाएगा आपका लाइफ. यू विल बी पेनलेस आफ्टर सम टाइम. बट आपको भरोसा करना पड़ेगा, मेरी हर बात पे विश्वास करना पड़ेगा. मैं जो बोलूं वो करना पड़ेगा. बोलो मतलब ये और कुछ नहीं बोल रहा हूँ. आपका 1 रुपया जाएगा नहीं थैंक यू बोलने में. इट इज फ्री ऑफ चार्ज. भगवान ने बहुत दिया है. इट इज इन अबंडेंस. यू स्टार्ट डूइंग दिस, आपकी बॉडी पेन डॉक्टर ने निकाल पाई, आप निकाल पाओगी. और हमेशा चाहे हुआ है, जो डॉक्टर नहीं कर सकता है वो बंदा कर सकता है. अपेक्षा, कई बार ऐसा हुआ मैं है. 6 साल बेड रिडन थी. तुम एक दिन की बात कर रहे हो, मैं 6 साल बेड रिडन थी, लेकिन अभी काफी ठीक है. और पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मैं चल फिर नहीं सकती थी, तो मेरे काम तो कुछ भी नहीं कर सकती थी लगभग 3-4 महीने, लेकिन अब कर सकती हूँ. तो वो हेल्थ है, वो हम गुड हेल्थ अट्रैक्ट कर ही सकते हैं. यस, Commendable. यू स्टार्ट डूइंग इट अपेक्षा. और आप देखिए, एक तो है ना नॉर्मन कजिन, उसका वीडियो देखिए या पढ़िए. एक है मिरेकल मैन. ये दो तो कम से कम देखिए, आपका बिलीफ बढ़ जाएगा. So the Miracle इतना Man and पावर है. नॉर्मन कजिन नाम है आदमी का, नॉर्मन कजिन, COUSIN. उनकी लाइफ में कैसे मिरेकल हुए आप पढ़िए. ऐसे बहुत सारे हैं पर ये दो तो खास पढ़िए आप. पढ़ना है, वीडियो Sure. बनेगा दोनों का वीडियो है. मिरेकल मैन तो है, नॉर्मन कजिन का भी है आई थिंक वीडियो. आपको यूट्यूब पे कुछ मिल जाएगा उनका. अच्छा. हाँ, सर एक बार मुझे WhatsApp पे भी लिखिएगा. I may forget. श्योर. यस,
The names, Pakka. yeah. Yeah. Okay, let's go ahead. So when you complain by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. If you're complaining about the weather, the traffic, your boss, your spouse, your family, a friend, a stranger, waiting in lines, bills, the economy, the cost of something, or the service of a company, you're not being grateful and you're pushing your dream life further away with every complaint. Now you understand that complaining, negative thoughts and words, and taking things for granted stops the good things in your life. Now you understand that when something goes very wrong, you have unintentionally not been grateful enough. It's impossible to be negative when you're grateful. It's impossible to criticize and blame when You are we are grateful. grateful. It's impossible to feel sad or have any negative feeling when you're grateful. And the best news is that if you have any negative situations in your life currently, it won't take a long period of time to transform them with gratitude. The negative situations will disappear in a puff of smoke, just like magic. Yes. आप जितनी कंप्लेन करोगी उतनी कंप्लेनिंग सिचुएशन आपके सामने आएगी. इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर. ट्रैफिक है और आप कंप्लेन करते हो, ट्रैफिक 10 मिनट की होगी, आपको 1 घंटे का एहसास दिलाएगी. मगर इफ यू आर ग्रेटफुल, उसी ट्रैफिक में आप किसी को फोन कर लोगी, अच्छा काम कर लोगी, और ट्रैफिक विल वेनिश इन अ मोमेंट. आपको पता ही नहीं चलेगा. इसलिए हर चीज के लिए जितना आप कंप्लेन करोगी उतना कंप्लेनिंग सिचुएशन पैदा होगी. बिकॉज व्हाट इज कंप्लेन इज नॉट अ रियल थिंग. इट इज योर फीलिंग, इट इज योर परसेप्शन, हाउ यू टेक इट. आप हर छोटी बात में कंप्लेन कर सकते हो, मगर if you take the control of your own situation and you start being grateful, when you are grateful, complaint cannot come. हो ही नहीं सकता है, because negative and positive are two parallelly running things. If you are negative, you cannot be positive, and if you are positive, you cannot be negative. Gratefulness is being negative, positive, and complaint is negative. तो आप जब grateful हो तो negative हो ही सकते हो. You cannot be complaining. कोई हिसाब से नहीं. It is impossible. So आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, आपको ग्रेटिट्यूड में आना है. स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल एवरीथिंग एंड एनीथिंग. जो भी आपको दिखे उसके लिए ग्रेटफुल होइए, क्यों हर चीज में कुछ अच्छाई होती है. कोई आपको 2 गाली देके जाए ना, उसमें भी अच्छाई कि उसने गाली दी, आपको मालूम तो पड़ा वो आदमी कैसा है. एक बात यू रियलाइज व्हाट टाइप ऑफ पर्सन दैट फेलो इज. और जब वो गाली देता है तो आपको रियलाइज होता है कैसे इंसान है लाइफ में, तो वी आर मच बेटर. और आपके बाकी दोस्त अच्छे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा, उसके लिए आपको और प्यार आएगा. तो उसमें भी अच्छा ही है, आपको ढूंढनी पड़ेगी. किसी ने आपको फंसाया. सर थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप? अरे मेरे घर पे वो सब, आज हम लोग बाहर है ना, सब सो रहे हैं. मेरा थोड़ा इश्यू हो गया आज. और वो क्या, छोटा बच्चा मेरे साथ सो रहा है आज. नहीं आ रहा है आवाज आपको? Yes, sir. सर आ तो रहा है, बस थोड़ा सा वो आ रहा है. प्लीज लग रहा है प्लीज टीवी बेयर की विद मी वॉल्यूम टुडे. कम हो गया था. इधर उठ गया है. So you have to come out of the negativity and complaining to be happy in life. More the complaint, more complaining situation, more grateful situation. Simple as that. हर चीज में अच्छाई है, हर चीज में बुराई है. आपके देखने पे it is in the eyes of the beholder. It is in the eyes of the beholder. Okay. So it is impossible to sad or have any negative feeling when you are grateful. हो ही नहीं सकता है. दो चीज साथ में हो ही नहीं सकती कभी. If you want to live a great life, be full of grateful. बहुत कृतज्ञ होइए हर चीज के लिए. एक टेबल है तो खुश, खुर्ची है तो हम खुश, एक लैंप है मेरे घर पे तो खुश. हर चीज के कृतज्ञ करिए. आपको लगेगा कि आप फालतू बात कर रहे हैं हरीश, बट करके तो देखिए कितना मजा आता है. ये मस्ती मस्ती में आप क्या सीख जाओगे दिख रहा हूं. आपको अभी मजाक लग रहा होगा, खुर्ची के लिए क्या बोलना है खुश. अरे भाई, देयर आर पीपल हु आर लिविंग ऑन द रोड, डोंट इवन हैव चेयर, दे हैव ब्रोकन चेयर. क्यों नहीं होने का? व्हाई नॉट टू बी ग्रेटफुल?
कई बार आप जब बाहर जाते हो, जैसे आई एम हैंडीकैप पर्सन और मैं गया मॉल में बैठने को जगह नहीं होती, तो मेरे को खुर्ची की बहुत याद आती है. दैट चेयर इज गॉड फॉर मी. इसी तरह आप लोग को भी ऐसा कभी होता होगा कि कोई बड़ी लाइन में लगे हो आप, तो लगता है साला एक कुर्सी होती अच्छा रहता था. हर चीज के लिए आपको कृतज्ञ होना है, अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. टाइम एट सर्टेन टाइम समथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम जिसको ग्रांटेड लेते हैं वही चीज बहुत ही जरूरी होती है हमारे लिए. स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट. क्योंकि चेयर के लिए क्या, टेबल के लिए क्या होना है, अरे टेबल की इतनी जरूरत होती है, कभी पूछो मत. आप कभी खाना खाने में बैठते हो, इधर अपना मैरिज में गए हो, बुफे डिनर होता है, हाथ में प्लेट लेते इतनी भारी लेके खाते हो, उस टाइम लगता है एक टेबल मिल जाता अच्छा है. सो यू कैन बी ग्रेटफुल एवरीथिंग एंड एनीथिंग. आपकी सोच पे है. जितना ग्रेटफुल हो जाओगे ना, उतना आपका फायदा होगा. ओके, yes Apeksha, let's go ahead. Harish ji, if you are not able to talk, may I do the explanation part? Please, I'll be thankful to you. कर लेते हैं, कोई बात नहीं. Please. आपको कुछ लगता है तो you can just add the points in the chat. I will do that Sure. explanation. पहले ही बोल देते आप. चलिए, thank you for Yes. your passion and motivation. Thanks. चलिए अपेक्षा. Yes. First, as difficult as it may be, you have to look for things to be grateful for in the negative situation. No matter how bad things are, you can always find something to be grateful for, especially when you know that your gratitude will magically transform every negative circumstance. Walt Disney, who knew about the true magic of life, showed us how to do this in his book Pollyanna. हाँ, ये मूवी का लिंक हम आज भेज देंगे. बहुत ही बढ़िया मूवी है एक इसका छोटी बेटी का, तो जिसमें दिखाया है कि आपको कैसे आप कितना भी निगेटिव सिचुएशन हो, आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हो. I see few new people here. Anybody for the first time? कोई है जिसने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है? कृतज्ञ, नेहा समथिंग सेड कृतज्ञ किसने बोला था? सर ने बोला था. Shilpa ji, I am always a first timer. yes, me too रूपल जी, me too. कृतज्ञ कभी बोला था जी? बिल्कुल नेहा, कृतज्ञ इज टू बी ग्रेटफुल एंड कृतज्ञ इज नॉट ग्रेटफुल. थैंक यू. और कौन है? एनीबडी हु इज न्यू? ओके, चलो. सो वी विल शेयर दिस लिंक टुडे इन द ग्रुप, दिस मूवी लिंक. और जैसे अभी सर ने भी बताया है, छोटी छोटी चीजों में हमको देखना है टू बी ग्रेटफुल फॉर. आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स अभी याद आ रहे हैं कि आप निगेटिव सिचुएशन में ज्यादा है और उस माइंडसेट में यू आर नॉट एबल टू सी द पॉजिटिविटी अराउंड यू? चैट में लिखेंगे, थोड़ा सा इंटरैक्टिव करेंगे ना तो बेटर होगा. ठीक है, चलो. अपेक्षा, जतिन जी थोड़ा ऊपर लेंगे. So Disney's the Disney's movie Pollyanna talks about when you complain, by the law of attraction, you must bring more things into your life to complain about. It's if you're complaining, no, we've already read this. Sorry. Yes, the next one. So Disney's 1960 movie Pollyanna featured the Glad game, which had a profound effect on me when I was a child. I played the Glad game featured in the movie through my childhood and adolescence. To play the Glad game, you look for as many things as you can to be glad about, especially in a negative situation. Finding things to be glad about or finding things to be grateful for in a negative situation make the solutions appear.
Walt Disney demonstrated the magic power of gratitude in Pollyanna, and thousands of years earlier, Buddha demonstrated the way to use the same magical power when he said, "Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. And if we got sick, at least we didn't die." So let us all be, can you please move to the next page? So let us all be thankful by Gautam Buddha, founder of Buddhism. Let Buddha's words be, okay. Okay. Sorry. या तो हमने ये पढ़ लिया अभी, जिस ये हरीश जी ने अभी बोल ही दिया है कि अगर आपके पास थैंकफुल होने के लिए कुछ नहीं है तो एटलीस्ट जो भी निगेटिविटी आपके पास नहीं है उसके लिए तो थैंकफुल आपको होना इज वेरी सिंपल। ठीक है, आप बीमार नहीं पड़े, कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो कुछ बुरा भी नहीं हुआ है, आप बीमार तो नहीं पड़े हैं, आप जिंदा तो है। द सेम एग्जाम्पल विच वॉज गिवन फ्यू मिनट्स अगो बाय हरीश जी। Yes, true. Yeah. I would request कि ये आप last paragraph दोबारा पढ़ेंगे थोड़ा सा, so that it goes inside. It is very good actually. Yeah. Yes. Let us rise up से दोबारा. Let us rise up and be thankful, for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little, and if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. So we should be thankful. जैसे रूपल जी ने कहा, it's his first day all the time. That means he is seeker, he is a learner. Every day he learns something new. Okay, हमारा attitude अगर हम उस तरह से रखें कि चलिए आज मुझे कुछ ना कुछ तो नया सीखना मिलेगा, then you learn something. Okay, because you are positive towards it, you are grateful towards it that you are able to learn. So we should be thankful that today we are here together learning something new, learning something better, and which we can apply it, okay, in our day-to-day life. So let us rise up to be thankful for if we didn't learn a lot today, at least we learned a little. And if we didn't learn a little, at least we didn't get sick. Okay, so today Apeksha must be very happy that I'm not sick as I was yesterday. And if we got sick, no worries. If we got sick, then the next line I'm not able to read. मेरा screen में थोड़ा. And if we got sick, at least we didn't die. At least we didn't die. At least we didn't die, right? So we didn't die. We are here today. So let us all be thankful. Thankful. Are we thankful that we are here today? Every time, you know, the basic gratitude is when you wake up in the morning, you say that, oh, I have seen this morning. This morning is beautiful. And at least I'm awake. Because many of us are, like many people, do not see the next morning itself. So you should always be thankful and grateful whenever you wake up in the morning that, yes, thank you, I woke up at least today. Okay. So we didn't die का मतलब ये भी हो सकता है कि you have to be thankful and grateful every morning that you are able to see this morning. Let Apeksha आगे. Yes. So let Buddha's words be your inspiration. And today, take one problem or a negative situation in your life that you most want to resolve, and look for 10 things to be grateful for. I know it can be challenging to begin this practice, but Buddha is showing you the way to do it. Make a written list of 10 things on your computer or in a gratitude journal. As an example, your problem might be that you're out of work, and despite your best efforts, you're still unemployed. To magically turn the situation around, you have to do a concentrated practice of gratitude on the situation. Here are some examples of what you might say. Next page, please. Point 1. I'm so grateful to have had more time for my family during this period. Point 2. I'm grateful that my life is in a lot better order because of the spare time I've had. 3.
I'm grateful that I've had a job most of my life and that I am experienced. 4, I'm truly grateful that this is the first time I have been unemployed. 5, I'm grateful that there are jobs out there and more new jobs are appearing each day. 6, I'm grateful for all the things that I've learned in applying for jobs and going for interviews. 7, I'm grateful that I have my health and that I can work. 8, I'm grateful for my family's encouragement and support. 9, I'm grateful for the rest I have had because I needed it. 10th, I'm grateful that through losing my job, I realized how much having a job means to me. I had never realized that until now. तो यहाँ पर है ना एक एग्जाम्पल दिया है कि सबसे एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नेगेटिव सिचुएशन में हम लोग हैं और हमको उस वक्त में समझ नहीं आता है कि भाई इसमें पॉजिटिव ही क्या हो सकता है। अगर घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार है या जैसे ये पैसों की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, तो हमको यही समझ में नहीं आता है कि हमको ग्रेटफुलनेस कहाँ से और थैंकफुल किस चीज के लिए रहे हम व्हेन वी आर इन स्टक इन सम डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट का। हम लोग ये एग्जाम्पल बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग ये एग्जाम्पल हेल्थ के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा हेल्थ कई कई साल तक ठीक नहीं था, तो उस वक्त में at least I could afford to go to doctor, at least I could afford to get some treatment. Diagnose नहीं हुआ तो हम लोग और बड़े हॉस्पिटल में जा सकते हैं। There are many people who cannot go for that treatment also. टेस्ट भी नहीं कर सकते या अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उससे तो बेटर ही कंडीशन था। दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते, मेरे पास है। तो इस तरह से हम लोग उस टेरिबल सिचुएशन में भी हमारा माइंडसेट अगर सही रखे तो हम वहां उस सिचुएशन में भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, बिकॉज देयर ऑलवेज इज समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। That is not a problem, sir. We have to always keep this in mind that अगर निगेटिविटी हमको देखती है तो पॉजिटिविटी वहां पर है ही, बस हमको पॉजिटिविटी को ही देखना है, ठीक है। और उस चीज में, उस निगेटिविटी में क्या है, जैसे ब्लैक में व्हाइट स्पॉट हमको ढूंढना है। अगर हमको ब्लैक दिखता है तो धीरे धीरे व्हाट हैपेंस इज यू विल नॉट सी एनी ब्लैक स्पॉट देयर। वो छोटा छोटा हो जाता है, आपको सारा व्हाइट ही दिखता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट में या बीमारी में एटलीस्ट यू गेट टाइम टू स्पेयर फॉर योरसेल्फ। आप अपने आप को थोड़ा प्रोग्रेस करने में, अंदर से अपने आप को जानने में वो वक्त मिल सकता है। अदरवाइज जब आप अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं या जॉब में रहते हैं, यू आर जस्ट doing something or the other, doing something or the other. You don't get rest, you don't get time to spend with your family, yourself, है ना। तो अगर आपकी ऐसी कुछ कंडीशन है जिसमें आपको कुछ कर नहीं पा रहे हैं आप, एंड यू आर idle at home, sitting at home, तो at least look at that point कि आप you are able to spend time with your kids, you are able to have people around you when you are not well, you are not, or everybody comes to you. कल ही मुझे अबोली ने एक स्टोरी भेजा था, उसमें लिखा था कि मदर इज ऑन द डेथ बेड, है ना, और उसके आजू बाजू में सारे फैमिली मेंबर्स हैं और उसके बच्चे हैं सारे और हस्बैंड है और सब है। तो बिफोर डाइंग वो बस इतना ही बोल देती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लव्ड एट दिस मोमेंट। हमको ये सारा साथ में बैठना इसके पहले भी बहुत सारा करना चाहिए था, क्योंकि जब हम जिंदा होते हैं या जब अच्छी पोजीशन में होते हैं वी आर नॉट थैंकफुल दैट कि हम लोग साथ में वक्त बिता सकते हैं, एक दूसरे को लव शो कर सकते हैं, बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। लेकिन जब डेथ बेड पे वो लेडी है तो उसको लग रहा है कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उसको मरने का गम नहीं है, बट शी इज फीलिंग लव कि उसके लिए इतने सारे लोग आज आजू बाजू खड़े हैं। तो ये जब वो जिंदा थी तभी भी हो सकता था, राइट। तो उस निगेटिविटी में भी शी फाउंड लव। तो ये है टू बी ग्रेटफुल फॉर, ये है कि हमको कैसे सिचुएशन में अपने आप को
एक इस पे लाना है, ग्रेटफुलनेस की पटरी पे ही अपने आप को रखना है. ठीक है, कैन वी गेट अहेड? Yes. So as a result of the unemployed person's gratitude, they will attract different circumstances, and their current situation must and will magically change. The power of gratitude is greater than any negative situation, and there are unlimited ways that the negative situation can change. All you have to do is practice gratitude and watch the magic take place. Let's take another example. A son who's next page, please. जतिन है. A son whose relationship with his father is troubled. The son feels that no matter what he does, it never seems to be good enough for his father. So the gratitude that you can do are: 1, I'm grateful that most of the relationships in my life are really good. 2, I'm grateful to my father for working hard so that I could have the education that he didn't get to have. 3, I'm grateful to my father for supporting our family through my childhood, because I didn't have a clue then how much hard work and money it took to keep our family going. 4th, I'm grateful to my father for taking me to basketball every Saturday when I was a child. Next page, please. 5, I'm grateful that my father is not as tough on me these days as he used to be in the past. 6, I'm grateful that my father cares so much about me, because he wouldn't be tough if he didn't care so much. 7th, I'm grateful that through my relationship with my father, I've learned to have compassion and a greater understanding with my children. 8, I'm grateful to my father for showing me how important encouragement is in raising happy, confident children. 9, I'm really grateful when I get to laugh with my father. Some people never got to do that because they didn't have a father. And for others who have lost their father, next page, please. They will never have the chance to laugh with their father again. And last, I'm so truly grateful that I have my father, because amid the tough times, there have been good times, and there will be more good times ahead with my father. As a result of the son's heartfelt feelings of gratitude for his father, he will change their relationship for the better. The son changed the way he thinks and feels about his father, which immediately changes what he attracts from his father. Even though the son was being grateful in his mind, at an energetic and quantum level, the son's gratitude will have a magical effect on his relationship with his father. Provided he maintains his gratitude by the law of attraction, the son must receive far better circumstances with his father, and their next page, please. And their relationship must begin to improve immediately. Okay. Remember, yeah. करें इसका एक्सप्लेनेशन. सो ये एग्जाम्पल दिया है फादर और सन का रिलेशनशिप का. ये हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. रिलेशनशिप विथ एनीवन, बॉस के साथ भी हो सकता है, कभी ज्यादा अनबन है, किसी का मदर के साथ है, किसी का हस्बैंड के या स्पाउस के साथ है, जो भी है. सो यू कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग गुड, समथिंग बेस्ट in the next person. Once you have to be great, first of all you have to be grateful for that particular relationship, that at least you have this relationship. Okay, है ही नहीं तो क्या, फिर उसके बाद उसके बारे में जितना भी आप अच्छा अच्छा कर सकते हैं, अच्छा अच्छा सोच सकते हैं कि जितना भी आपके पास है वो बेटर है. because many people do not have that much, many people do not have father. I lost my father when I was just 17-18 years old. So सवाल ही नहीं आता है. And very tough relationship with my mother. But then I started, after doing this, I started being grateful for कि at least my mom is there and she is there to support me. So the relationship changed dramatically from both the sides.
So I have applied this, literally applied this. बस father की जगह पे mother was there. So do think about the relationships in your life and how they are. You can rate them. Okay, कि आपका सबके साथ maximum लोगों के साथ relationship कैसा है. एक दो relationship खराब है, then it's different. अगर बहुत ज्यादा खराब है तो start giving grateful, be thankful for whatever relationships you have, and see that magic happening in your life. Can anybody give me some example or ask me some question कि इस relationship में ये problem है तो what do I do? Anybody wants to ask? 11 लोग हैं, सबके relationship एकदम सही चल रहे हैं सबके साथ. So does that also include friends, or is it just family members? Yes, Satyan? Sorry, I lost your voice. No, the relationship that you're talking about, does it also include friends, or is it only family members? Friends. No, with others. With others, because today's topic is with others. Okay. So it means somebody who you don't have anything to do with, is it? No, self. I'm sorry, I could not get your question. Self, you said self, or you said No, other- I'm trying to ask because I have, let's say, a problem with a particular friend. So friends are out, right? It's just yeah, people. no. With friend also, anyone. So okay, fine. So let's talk about a specific example of a person who I know. Yeah, who's very close. Can you hear me? Yeah. So a person who I know is very close, right? Hmm. Now this person, unfortunately, I mean, I know the person for, let's say, it's more than 10 years now, and they're family friends, but this particular person has a problem of, well, it's a mental issue. Okay. Now, because of that, and I am trying my best as a friend to help that person to see a doctor, to all kinds of doctors. I even go with the person. I even try and get that person to take medicine, but that person is just resisting. And the fallout of that is that sometimes it leads to anger in both of us. And then we end up, fighting with each other, whatever. But I am trying to do good. There's massive resistance for whatever reason. I guess that person is just living in denial, doesn't want to accept the mental state. So I don't know how to solve that problem. How do you solve that problem? Can you connect to me after some time? Yeah. Personally, offline. एंड फॉर अदर्स हरीश जी, लेकिन ये सबके लिए गाइडेंस मिले उसके लिए हम एक बोल सकते हैं कि यू कैन नॉट चेंज द नेक्स्ट पर्सन. ओके, आपको हमेशा अपने पे फोकस करना है. यू ऑल्सो मेंशन दैट यू आर डूइंग योर बेस्ट टू हेल्प दैट पर्सन, सो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट you are doing and what that person is taking or what that person is doing is not in your hand. Okay, Satyan? So you are doing your best. Be grateful for you are learning something. Okay, that there are people who are going through mental health issues and sometimes they are in denial and you want to help them. You are trying to help them. So be grateful for that and be grateful for that person, that friend, that the more you be grateful to him and try giving gratitude towards his mental health, it will certainly improve. He's coming with you to the doctor. Okay, that is again a good thing that at least he's coming with you. He is fighting with you. That means he's at least talking to you. There are people who will not talk only. And this is a very basic thing in the mental health issue because the person will never accept that he has some issue. That is why he has the issue, right? That is why he has, because he doesn't accept many of this thing, right? So and you can. So what's the solution in that case? I mean, is there a solution or just leave it? No. It will certainly change. It will certainly change with the help of gratitude. You have to look for yourself. You have to see what is your feeling towards it. You have to see what is the gratitude you can give in that condition. What can be you grateful for in that condition? You have a friend and you are doing something for that friend.
that is a gratitude. That way you can do it and keep doing it. I mean, the only thing that I've learned in this is that this person makes me angry, and I need to concentrate on my anger management probably. नहीं So be नहीं नहीं, we'll have to grateful. talk. नहीं सत्यन जी, we have to talk on this. आप मेरे को हाय भेजिए, अपन बात करेंगे. It ठीक can है, be resolved. Thank you. ये इसमें अनिवार्य आपको 1-to-1 करना पड़ेगा. Okay, thank you. Okay, yes. Okay, thanks. But can I share one personal, which something similar which happened to me? Of Sure, course, sure, please, sir. sure. My sister had some mental issues because she had one daughter only as a child, and the daughter got married, and then my sister went into great depression to the extent that she became in fact inimical to us also. She didn't want to talk to us. We tried to intervene, we tried to help her out to take out from the depression. I called her at my place, you stay with us and all that. And the husband, actually being a businessman, was not able to spend much time with her. Now later on, and she refused even to take medicines. We showed her to psychiatrist and all that. And it became a very, I would say, very difficult situation for us. We wanted to help her out, but we didn't know how to do that. Later on, I just met a counselor. I just arranged, a friend of ours. She said there is a counselor, and that lady. So I told her, that lady, you please, you go directly to her and just say that I'm so and so, and that I would just want to be friends with you. I'm your neighbor or this and that, like that. So then gradually she won that confidence, that counselor. And so she was not at all approachable, my sister. But then through that counselor only, we tried to, we were having the feedback that how she is behaving and all that. So that counselor actually helped us much. Then gradually, because then she became a friend, and then she would eat with our sister. And then also once or twice she even stayed there at night also, because she had that some phobias and all that. So then this and we, of course, we were paying that counselor also. Then later on, that counselor told us that because of course she there's a affluent family she is in, and they didn't have any dearth of money. But then the counselor advised us that it will be better that if she takes up some job or at least some social service she does. So my sister is actually MA B.Ed. So we then, I searched, my sister is in Chandigarh. So I searched for a society, where there are these poor children and who need some teachers. So then once she was in that mental state that she could move out, then this counselor took her to this society. And this society then, they said, okay, we will keep her. So to that extent that, we said, I told that society that I will pay you, and you pay my sister as if she is getting some money, from the society that will put her in right frame. And so I was sending money to that society, and the society was paying in turn to my sister. And now she is perfectly all right. And now she is, meeting us. Now the situation has come back to that normal situation. So this all, this is a lot of patience and lot of, I would say that opportunities you have to see how to help that person out. Because sometimes you may not be directly in a position to help them, but then if you are really serious and you want to help that person, you have to find out the way, how this should be done. In your sister case, it was lack of love. She felt Yes. lonely because her husband was Yes. a businessman, and then the daughter had also left, and she didn't have anything to do except for watching TV, and then just and she would say that I'm very busy, I've got lot of Manoj ji, household work. Yes. she had no purpose.
frankly speaking. Correct. I had heard a story. Hmm. एक माँ, उसका बच्चा बहुत कमजोर था, Hmm. and she had some critical illness. Hmm. Till that child grew and was on his own, she lived. Hmm. And as soon as Hmm. the child was perfect, she died. Hmm. Yes, She yes, yes. carried on that illness till that Yes. purpose was fulfilled. Correct, correct, correct. ऐसा होता है. Yes, yes. There is one incident which with my neighbor only it happened. They had a child who was physically challenged, and that they had two sons. One son was normal, the other child was physically challenged, and then all of a sudden the child actually died. And the mother, within 1 month, she said, "Now there is no purpose left for me." So she also died. She was all right. She was healthy. But then the mother also said that there's no purpose now left for me in this world. And she just within 1 month, she died. Yes, yes. Same with my friend. His father died. Till his father was ill and that wife was serving. Both were alive. Father died. Within a year, mother died. होता है. I think there Okay. that gratitude comes, that to put you into that right frame, there Yes. at least this gratitude works for you. Because you otherwise you feel that there's no purpose left, and then you get into that trap. Okay, let's go ahead. Let's go ahead. Right, sister. Thank you. Hello, Shilpa, let's go ahead. Hello. अपेक्षा रीड करिए ना, अपेक्षा. Yes, I continue. Yeah, Yes, yeah. yes. So remember, you can tell your gratitude is working by the way that you feel. You should feel a lot better about the situation after practicing gratitude. The first evidence of gratitude's magical power working is your feelings lifting. So when you feel better about it, you know the situation will improve and the solutions will appear. The answer to any negative situation you want to resolve is to focus concentrated gratitude on it until you feel better inside. Then you will see the magic work its wonder in the outside world. In making a written list, make sure you list each of the 10 things you're grateful for in the following way. I'm so grateful for dash. Or I'm truly grateful for dash. And finish the sentence with what you're grateful for. You can also use Walt Disney's way of using gratitude's magical power if you find it easier. I'm so glad that dash. And finish the sentence with what you're glad about. Once you've listed 10 things you're grateful for, finish the magical way out of negativity practice by writing, thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. And just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. It may be a challenge, but see if you can make it. Make it through one day. There's an important reason to do this. अपेक्षा एक सेकेंड ना. ये जो बोला है अभी करने के लिए कि एक भी निगेटिव चीज हमको नहीं सोचनी है, नहीं करनी है. दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस. ठीक है, तो हमको हमेशा अवेयर रहना है एंड दैट अवेयरनेस हेल्प्स अस कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है. समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे टीवी का चैनल चल रहा है, बट हम देख नहीं रहे हैं, हमको पता नहीं. लेकिन being aware of whatever going on in mind is can be very powerful step, because then you understand whether it is negative or positive. So ये आज का powerful exercise होगा कि आपको awareness आएगा and entire day and इसके आगे भी you will be able to see that कि आप किस चीज में negativity देख रहे हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है. Basically what comes in your mind whenever you see something or whenever something happens. तो आपका दिमाग react कैसे कर रहा है, positively कर रहा है कि negatively कर रहा है. That this can be a very powerful exercise. चलिए आगे. There's an important reason to do this because most of us have no idea how much we speak negatively.
but you will have an idea after watching your words for a day. Remember that negativity and complaint bring more of these things, and if you're aware of what you're saying, you can stop and decide if you want the consequences of what you're about to say. Here's a magic lifeline you can use. If you notice yourself thinking or saying something negative, stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. Finish the rest of the sentence with something, anything that you're grateful for. Take this magic lifeline with you and grab a hold of it whenever you need it. So when we are in a beginning level, कि हम लोगों को it's difficult for us to always be in positive thoughts. We can use this magical practice, magic thing, that whenever we start thinking something negative, we are aware of it that we are negative, and then just shift it to positive the way it has been shown here. But I have to say that I'm really grateful for. So you are training your mind that though I am now seeing something negative, I can take a turn towards positivity. So you have to train that how to go from negativity towards positivity. ये छोटे छोटे जो स्टेप्स इस बुक में दिखाए हैं, बताए हैं हमको करने के लिए, एंड वी आर प्रैक्टिसिंग ओवर द डे 28 days, that after 28 days your mind is fully transformed, it is changed totally. ठीक है, ये पूरा माइंड का ही अवेयरनेस का ही खेल है. एवरीथिंग इज नो दैट इट गोज हैंड इन हैंड. So whenever you are in doubt, you how to be grateful for, और मेरे दिमाग में पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, so it is shown that how you can bring yourself from negativity towards positivity. Yes, Apeksha. Can you please move to the next page? And if any little problem or situation appears in the future, remember to put out the embers with gratitude before it grows into a fire. At the same time, you will ignite magic in your life. Magic practice number 7, the magical way out of negativity. 1, count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2, choose one problem or negative situation in your life that you most want to resolve. 3, list 10 things that you're grateful for about the negative situation. 4, at the end of your list, write thank you, thank you, thank you for the perfect resolution. 5, just for today, see if you can get through one day without saying anything negative. If you notice yourself thinking or saying something negative, use the magic lifeline. Stop immediately and say, but I have to say that I'm really grateful for dash. 6th, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Next page, or that's over? That's done. So आज के प्रैक्टिस में बोला है फर्स्ट, अरे शेयरिंग बंद कर दिया जतिन. Gratitude, 10 gratitude लिखना is a common practice, and holding magical rock is a common practice that is for every day, और ये अभी लाइफ लॉन्ग रहेगा. और जो बाकी के प्रैक्टिसेस बोले हैं, आपको एक नेगेटिव सिचुएशन निकालना है आपके लाइफ में से, और उसको आपको 10 gratitude, 10 positive to be grateful for things लिखने हैं. And if at all in your entire day you feel you see that you are getting some negative situations or thoughts, what you are going to do is using the line, but I am grateful for. Truly grateful for. Okay, ठीक है. Choose a problem list. ठीक है, I think it's clear. Any doubts? Anyone? What is this magic rock you talk about?
वो day 2 का practice है सत्यन. Okay. I'll explain you. We will be connecting, right? So I'll explain you. Yeah. Okay. So thank you. Yeah. किसी को कुछ पूछना है? So may I take leave, please? It's already 8:15. Yes. Okay. Oh, sure. किसी को कुछ पूछना है? आज का सेशन सर काफी अच्छा है एक्चुअली ना. नेगेटिविटी से हर कोई इंसान गुजरता है सर. 100%. और जो इसलिए मैं सत्यन जी को बोला, अपन It's बात a करते very हैं. it's a very big thing to achieve. अगर कोई नो कंप्लेंट डे निकाल सकता है अपना 24 घंटे बिना कंप्लेंट करे निकाल सकता है. एक्चुअली वो भी होता चैप्टर क्या है. है, एक्चुअली होता है कि अगर आप 100 चीजें भी कर लो ना, 101वीं चीज ऐसी आ जाती है जिससे आप थोड़ा सा नाखुश हो जाते हो. बट अगर कोई ऐसा कर सकता है तो दैट इज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट. इनक्रेडिबल. यस. बुद्धा करते थे. नहीं, भगवान बुद्ध करते थे. हमको बुद्ध बनना पड़ेगा. वो तो चलो नहीं बन सकते, बट हाँ ये है कि कोशिश जरूर कर सकते. Yes. We are being better, na. At least we are being better every day. That's better. Okay. ठीक है. चलो. Let's close the day. Satyam will connect again. Okay. After some time. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.